BNY Mellon के अंदर मेरे से 3 राउंड लिए गए थे. Yeah, so the question difficulty was medium, like easy to medium, not hard. But the last question that was asked, like last in the last round, was related to DP, which was lead code hard problem. So I found. Hello, love. How are you? Yeah, hi Raj. I'm good. How about you? Yes, awesome. So our today's discussion is कि स्टूडेंट को अगर एमएनसी क्रैक करनी है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. So we will discuss this today. Okay, that's great. Okay, can you please introduce yourself? Yeah, so hi everyone. I am Parashar. Right now, I am a software developer at BNY Mellon, and I have done my graduation from DTU from IT major. So, and I know about AngularJS and Spring Boot like tech stack. So I came to know about all of these from joining of my first company, and that is BNY Mellon. So that's all about me in brief. Great. So let's start the Q&A. So my first question is कि इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं जनरली, and details of each round, and some tips and tricks to crack those rounds. Yeah, so BNY Mellon के अंदर मेरे से 3 राउंड लिए गए थे इंटरव्यूज के, जिसके अंदर जो फर्स्ट राउंड था इंटरव्यू का, that was totally based upon the DSA, and the like like there was one more puzzle was asked other than the DSA question, so it was only about the DSA. Second round was related to DSA, puzzle, and the projects, so it included projects too. And the third round was with the director of the BNY Mellon, and it was like the techno managerial round, so where I was asked one hard DP problem that I know, like it was really surprising for me. Actually, I did not know that the director can ask the DP problem. So he asked me the DP problem, and after that, he went about the discussion for the projects that I made. So, and he also like one project that I made was based upon the web application. So I did not like made it live. So he asked me to share the screen and to show what projects did you made, and like what will you be doing to make it live. So like that is the summary of all the rounds that I had with BNY Mellon. So, Great. and And yeah, DSA difficulties, DSA questions difficulties. So the question difficulty was medium, like easy to medium, not hard. But the last question that was asked, like last in the last round, was related to DP, which was lead code hard problem. So I Mhm. found it lead code hard problem. I did not solve it before, so I got a chance. I got to learn a lot. I was solving it at that time for the first time, and I was able to solve that. So like that was lead code hard problem related to DP, but I was able to solve at that time. So, but other than that, all of the other rounds were having the problem difficulty from medium, so from easy to medium only, not the hard level difficulty. PSA questions were asked. ग्रेट ऑसम. सो आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड में क्या किया था, एंड किसी भी आईटी या सीएस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए टू क्रैक सम एमएनसी एंड ऑल? Okay, so as I told that like DSA ही मुझसे पूछा गया था. So DSA, for DSA, like if you have to prepare for DSA, then you must choose two platforms. One is LeetCode, another is InterviewBit. I'm not saying just only these two platforms. If you want to explore any other platform, you can go there and you can start coding from any other platform. There are multiple platforms like HackerRank, and like InterviewBit, as I said. So and GFG also, like it is just like made for each and every developer. So you can start with anything, but I chose lead code and interview bit. Why? Because the lead code has a pattern, like you can search the problems when you're just starting your coding journey. You can search the problems according to their tags, right? And also like you will be able to pick some new problems each and every day. Whatever you are doing, it's good, but let's say if you have to pick something new, so you can go there and you can just pick the new lead code problem from the pick one section.
there's one pick one section. If you think that you now have understood the DSA well, now you can start solving some good problems, then you can do that. So and also interview bit is really helpful, because lead code में ऐसा होता है कि sometimes you find some of the problems which are coming, which are of the easy level only. So you want to level up, like, so that in the case you must go to the interview bit, because interview bit पे ऐसा होता है कि उस पे जो भी प्रॉब्लम्स किसी पर्टिकुलर टैग की होती है वो किसी न किसी बड़ी एमएनसी में पूछी गई होती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, उसके सबके साथ टैग भी लिखे होते हैं। तो और ऑल्सो देयर इज अ टाइमर at the interview bit. So let's say if you solve one problem in 35 minutes, after that you will be seeing like your marks are deducting. So from there you will be able to understand like इसको करने के लिए कितना एवरेज टाइम चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो इंटरव्यू बिट इज रियली हैंडी फॉर दैट. So I found interview bit and lead code very helpful, and I started to coding on lead code and then went to the interview bit. I learned a lot while building like while making the problems like while like there was one course that I took at the second semester, when I did not know about coding at all. Actually, I did not know about coding at all till the second semester, and even C++ I did not have done. So I started to look some of the small YouTube videos related to how the C++ works. But then I took the course at the Coding Ninjas. So like you don't need to have that. You have a lot of other sources right now which are available, because at that time in the 2018 I took that course. There was no such videos, but from 2020 I found that lot of people are like posting uh, videos related to DSA and all. So like you can find if you are a fresher, you can find a lot of videos there, and the topic wise videos are also there, so you can start to look at them, and you can try to solve those problems. Just don't look at them, just try to solve the problems. When you look at a particular solution, just try to solve by yourself. And let's say if you are solving a lead code problem, then if you have solved it perfectly, then also you should go to the discuss section of that, so that you will be able to understand like how other people are approaching to that particular problem. Okay, so in that case you will gain the intuition behind that problem, so how this particular problem can be solved in multiple ways. एंड बिकॉज लेट्स से लाइक एक एल का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने एन स्क्वायर में कर दिया, देयर आर सम अदर पीपल हु आर डूइंग इट इन एन लॉग एन, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट लाइक एन लॉग एन में भी कोई अप्रोच होती है, तो उसके लिए तुम्हें बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा. तो मैंने स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं किया था. जब मैं सेकंड ईयर में कोर्स वगैरह लिया, थोड़ा सा डीएसए सीखा, उसके बाद मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बिकॉज दैट कोर्स वाज जस्ट रिलेटेड टू बेसिक्स. सो खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एंड फिर उसके बाद मैंने जाकर अब मतलब कुछ साल के पहले, जस्ट इंटर्न से पहले, मैंने ये सब चीजें स्टार्ट करी, लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट. उस पे मैंने से ये सब चीज देखी और मेरे को लगा कि हाँ, कि किस तरह से अप्रोच करते हैं एक प्रॉब्लम को. तो वो मेरे लिए बहुत ही की पॉइंट था जिसने मुझे हेल्प करी इस कोडिंग इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुलिश टू आस्क बट आई विल स्टिल आस्क कि एक दिन में कितना डीएसए करना चाहिए, कितने आवर्स करना चाहिए, और अदर देन आई वुड से कि कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने चाहिए. इट वुड बी अ गुड क्वेश्चन आई गेस. या so actually I did not follow this strategy. Yes, you must be very consistent while solving the problems. You should stick to one to two good problems from very starting. And let's say if you want to raise your bar, so you should go to 3 to 4 problems of DSA every day. But I did not follow that strategy. Actually, I believe that let's say if you are solving problems, you might have time. Like let's say you might have a day where you have a lot of time, and you might have a day where you don't have a time to solve single problem. You might be at function at all. So like what you can do, you can just stick to one strategy, and that is, let's say if you have to solve some problems in a particular day, you can pick a time and try to do that within 2 to 3 hours. Like how much you can do, it's up to the difficulty of the problem that you are choosing, but just try to give 2 to 3 hours to the coding for one single day. So that's, I believe, will be very good if like you will follow this particular pattern. So it will be good for you. But I could not follow that. Sometimes I started to like code at 7 a.m. and like I finished at 12 p.m. And sometimes I did not even code. So like 12 p.m. like continuously for 5 hours I
like gave to the coding, but for other days I did not give 1 single minute for the coding because of the some assignment work and all, because we are part of college. If you are Yes. asking for freshers, so like you can consider that they don't have much time, but it is good, like you, if you are consistent, just go to solve for 2 to 3 hours in each day. ग्रेट। और ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि वी डोंट हैव इनफ टाइम टू मेंटेन डेवलपमेंट डीएसए इन द कॉलेज लाइफ टुगेदर, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन? Yes. So let's say if you're a fresher, so just try to understand about the tech stack for which you have to make the projects. So just don't go. Let's say first of all, I have to say one thing: we go just for the placement. We don't go for our interest, right? So let's say our interest is in web development, our interest is in AI, and not in game development. Then we will not do that, right? So sometimes we only focus that yeah, for the placement, web development is good, not this AI. So like sometimes I have seen a lot of people doing that, but I will say that just go with your like interest. First pick whatever you want to do, and then just give time, because let's say अगर तुम उसको पिक करोगे जो कि तुम्हारा इंटरेस्ट का है, तो तुम उसमें टाइम देने के लिए ऑलरेडी मोटिवेटेड होगे, राइट? अग्री। सो वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, या फिर कुछ भी जिसके अंदर तुम्हें करना है, एआई, मशीन लर्निंग वगैरह, उसके अंदर सब में तुम इंटरेस्ट जगाओ अपने अंदर। फिर उसके बाद अगर तुम्हें टाइम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो कि जितना टाइम तुम बाकी कामों को दे रहे हो, उसके अंदर से 2 से 3 आवर्स निकाल के अपने इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए या फिर बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए दो। ताकि उससे ये होगा कि इन फ्यूचर अगर लेट्स से इफ यू डोंट हैव टाइम, लेट्स से कुछ तबीयत खराब हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है बाद में, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेंटेन होगा कि हाँ, बना चुके हो आप वो। तो जब भी इंटर्नशिप हो या प्लेसमेंट सेशन हो, उससे 1 महीना पहले तक ये सब चीज प्रिपेयर हो जाए, तो दैट विल बी वेरी गुड, because you will not be bound to the time. In that case, you will have some good time for for 1 month you can prepare for dbms, operating system, like these type of topics, and you will not waste your time in solving in preparing the projects in that time. Like if you don't have time, let's say if you have wasted a little bit of your time, then in that case what you can do is just you have 1 month or 2 months before the internship or the placement. So then what you can do, just try to make one simple project, because I found that not 2 to 3 projects are required, only 1 to 2 projects are good. One to two हम्म। good projects are good. So you can try preparing that, and try to make that, and try to have good enough knowledge about that, so that will be good. सो टाइम निकालने की बात अगर है, तो टाइम तो जब भी निकलेगा जब तुम वो काम करोगे जो कि इंटरेस्ट का है। सो मैंने वेब डेवलपमेंट को चूज किया था, तो वेब डेवलपमेंट मेरे को लगा, मैंने स्टार्ट किया बनाना, मतलब एप्लीकेशन वगैरह, तो उससे मेरे को बहुत क्लैरिटी मिली कि किस तरह से एप्लीकेशन वर्क करती है, किस तरह से सर्वर वर्क करता है, राइट? सो मेरे को इंटरेस्ट लगने लगा, तो मैं टाइम खुद अपनी बाकी एक्टिविटीज से निकालने लग गया था। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप वो चीज करो जो कि आपके इंटरेस्ट की, क्योंकि कंपनीज के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर सब तरह का वर्क हो रहा है। एआई रिलेटेड भी है, और वेब डेवलपमेंट रिलेटेड भी है, एंड्रॉइड भी रिलेटेड है। तो आपको आपके जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, आपने किया है, उसके बेसिस पर आपको रोल असाइन होगा। ग्रेट। सो आपने मेंशन किया कि आपने कोडिंग निंजा का कोर्स भी लिया था, और उसके अलावा रिसोर्सेज शायद फॉलो किए होंगे, फ्री रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल, सो उसके बारे में थोड़ा। या so yeah, so after putting the source, I found that I'm still lacking my things, because companies started to ask deep good problems, like cp related problems, so हम्म। complicated problems, so मैं उसमें लैग कर रहा था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अपने बेसिक्स और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज की यूट्यूब पे पेप कोडिंग चैनल है, तो मैंने वो देखना स्टार्ट किया था। उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो लीड कोड के कराते थे, मैंने वो देखना स्टार्ट किया, खुद से सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैंने कोड फोर्सेस वगैरह की जो साइट पे उस पे कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे, जिससे मुझे लगा कि हाँ, मतलब मैं कुछ नई प्रॉब्लम्स जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू में आस नहीं है, लेकिन कुछ नई प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट किए थे, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। और फ्री रिसोर्सेज में तो पैप कोडिंग का जो यूट्यूब चैनल है उसकी कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, और एक पैप कोडिंग ने एक अपनी शीट बनाई थी शायद, तो वो मैंने फॉलो की थी।
So 450 questions were there. 450 Yeah, questions. 450 questions are there on the pep coding site. You can follow that. Those are good questions. Like they will make you the interview ready question, like interview ready. So मैंने देखा कि गूगल में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के अंदर भी कुछ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, नॉट the easy level question or medium level question, the hard level questions are also mentioned there, so you can follow uh, that sheet. But वो मैंने follow जब करी, जब मेरे को लग गया था कि मैं इंटरमीडिएट हो चुका हूँ अपनी कोडिंग के अंदर, लाइक डीएसए के अंदर, so जब मैंने उसे follow किया था. Okay, great. And the next question is कि how to find off-campus opportunities. Also talk about importance of LinkedIn. Yeah, so like LinkedIn के अंदर there's one job section, and also what you can do, you can just go to uh, the company's profile. There's a profile section, like you can go to the company's profile. Let's say if you have to search for the job at Microsoft, then you can just go to the Microsoft profile, and then you can search for the job section, and inside the job section there will be jobs that will be mentioned there. So like Microsoft अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कुछ निकाला है, तो उसके बारे में तुम्हें पता पड़ जाएगा। तो वो सब चीज़ तुम वहाँ पे उस सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हो। और व्हाट यू कैन डू, लेट्स से इफ यू आई हैव फाउंड दैट जॉब, सो उसके अंदर अब रेफरल भी चाहिए होगा, तो रेफरल के लिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपल जाओ माइक्रोसॉफ्ट के आगे जिस भी कॉलेज से तुम हो, उस कॉलेज का नाम लिख दो, तो उसके अंदर उस कॉलेज के ऑलरेडी सीनियर जो वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे, उन सब की प्रोफाइल्स डिस्प्ले हो जाएंगी, उन सबको कॉन्टेक्ट कर सकते हो तुम और अपना रिज्यूमे भेज सकते हो। अगर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल जो कि उस टाइम पर एक्टिव है, मतलब जो जॉब जो वहाँ उस टाइम पर एक्टिव है, उसके लिए तुम रेफरल मांग सकते हो। तो मैंने भी यही किया था एक्चुअली। मैं भी मतलब सर्च कर रहा था कुछ ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने भी ये स्टार्ट किया और आई फाउंड लीड को लाइक नॉट लीड को सॉरी लिंक्डइन LinkedIn. very effective for this. So LinkedIn is actually the tool which gives you the opportunities, so Hmm. where you can put your skills, so that sometimes recruiter might also reach you. So if you like, he'll be fascinated with your skills, so he might reach you. So LinkedIn is like very good tool if you have to find the job. You can go to the job section, you can search the company, and then you can go to the job section of that company, and then you can see whatever job fits you. So Yes, true, true, 100% true. Can you please talk about some of your failures? Because कई बार क्या होता है कि कॉन्टेस्ट में 2-3 बार अगर रेटिंग डाउन चली जाए तो फिर मोटिवेशन पूरा हो जाता है. so that is not related only the contest, but the related to my second year, because I'm from DTU. Actually companies started to come for internship at the end of the second year itself. So till that time I could not prepare DSA. I prepared DSA, but I could not prepare it really well, so that I could solve whichever problems which are not being asked previously. Let's say if some new problem comes and you have to solve it into the interview, and you're not, and if you're not interview ready, then in that case you will get it. So like that happened with me. So till the second year, I was not interview ready. Like I gave the interviews, I got rejected, and like I did not follow some pattern, like that pattern, like how you have to go to the discuss section, you have to see how the others are doing that same problem, and how you have to go to the sites like code forces, and there one more that is code chef and all. So you must know like कि contest देने से आपकी rating ही नहीं, बल्कि आपको खुद ही एक पता चल जाता है कि कितना स्कोर कर टाइम contest भी मैंने पता नहीं, तो मैंने भी नहीं लगा। ये मेरा फेलियर Mhm. था एक्चुअली. सो that was a big failure that I had, and I have seen like many of the people got the internship at Microsoft, Amazon, Optum, and Google, and many other big companies. Even in the BNY Mellon, they also got the internship. I could not get the internship at BNY Mellon while being at the DTU till the second year. So just because I could not follow the pattern, I was just doing the basics of the DSA. I was good at some other topics like DBMS, OOPS, and like CN, but वो कॉन्टेस्ट नहीं देने की वजह से जो एक फियर था ना नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम, सो वो रह ही गया, और उसकी वजह से बहुत से कोडिंग इंटरव्यूज और बहुत से कोडिंग राउंड्स मैं क्रैक नहीं कर पाया था. सो उसको बस मैंने स्टार्ट किया कि भाई अपना देख लो हैकर रैंक या हैकर अर्थ पे, या फिर क्योंकि मतलब जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने हैकर रैंक या हैकर अर्थ पे कॉन्टेस्ट मतलब टेस्ट लिए थे कोडिंग राउंड के, तो
उनकी भी मुझे नॉलेज नहीं थी, तो वहाँ से पता पड़ा, वहाँ से एक्चुअली स्टार्टिंग हुई मेरे को सीखने की कि मेरे को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे अप्रोच करना है। तो वो फेलियर था मेरा सबसे बड़ा अभी तक का। और सेकंड फेलियर जो आप बात कर रहे हो अबाउट द कॉन्टेस्ट की रेटिंग अगर डाउन हो गई या फिर अप होती है, तो यार इट डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑल्सो। यू शुड नॉट थिंक कि अभी रेटिंग डाउन हो गई है तो यू विल लीव। नो, लीव मत करो, लगे रहो। हर वीकली बाई वीकली जितने भी जब कॉन्टेस्ट दे पा रहे हो तुम दो, क्योंकि उससे ये होता है कि सिर्फ रेटिंग की वजह से ही नहीं। और मैं तो कभी अब ये कहता हूँ कि रेटिंग देखो भी मत स्टार्टिंग में अगर तुम कर रहे हो तो काम। अब तुम ये देखोगे कि फर्स्ट टाइम तुमने डिव 3 का एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करी, दैट विल बी गुड। सेकंड टाइम तुम 3 कर पाओगे, कभी कभी ऐसा टाइम आएगा 4 भी कर पाओगे, और फिर दोबारा ऐसा टाइम आएगा जब 2 भी रह जाएंगी। तो वो टाइम होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अप्रोच कर पा रहे हो प्रॉब्लम्स को उस पर्टिकुलर डे पर, और डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो रेटिंग अप एंड डाउन होती रहती है, वो मैटर नहीं करती। आप किसी भी बड़े से बड़े कोड फोर्सेज एक्सपर्ट मास्टर इन बंदों को भी देखोगे तो उनकी रेटिंग भी वो एक ग्राफ की Ups तरह and बिल्कुल downs, सिंपल ऐसे yes. लीनियर फॉर्म में या लीनियर फॉर्म में नहीं होगी, तो अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर। सो तो लगे रहो। मेरा मानना तो ये है कि कभी भी जब भी रेटिंग डाउन हो, तो यहाँ पे अब तो बहुत फैसिलिटी है कि आप यूट्यूब पे जाके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सॉल्यूशन भी देख सकते हो जो आपने सॉल्व नहीं किया। अगर वो ई और डी का प्रॉब्लम, डी ई एफ, ये लास्ट 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, मे बी उनके सॉल्यूशन मिले ना मिले, लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी वहाँ पे कोड फोर्सेस पे जो बाकी बंदों ने करे होंगे तो अवेलेबल होते हैं। अगर आप वहां तक नहीं, लेकिन अगर आप सी या डी प्रॉब्लम पे भी अटक रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मैंने देखे हैं कि बहुत लोग अब डाल रहे हैं, तो तुम जाकर वो देख सकते हो। और हेजिटेट होना नहीं है, लगे रहना है। मेन बात तो ये है, क्योंकि मैंने भी खुद देखा कि अपने आप को कि जैसे ही रेटिंग डाउन होती थी तो मुझे भी लगता था कि यार आई एम नॉट डूइंग वेल, बट एक्चुअली आई वाज गुड, क्योंकि वो रेटिंग वो डिपेंड करता है कि उस टाइम बाकी बंदे तुमसे अच्छा कर रहे हैं और डिफिकल्टी किस तरह की है। लेकिन आपको डाउन नहीं होना, आपको लगे रहना है, और मैं लगा रहा। इसी वजह से मेरे को लगा कि फायदा है कि भाई नई प्रॉब्लम जब भी आई, कोडिंग इंटरव्यू के अंदर आई थी लास्ट में, Great. प्रॉब्लम सॉल्व Awesome. तो अभी जो 2 मिनट पहले आपने कहा उसको अप सॉल्विंग कहते हैं, आई गेस। अप सॉल्विंग, राइट? यस, या After contest, we should solve the problem that during contest we didn't. Yes, great या advice. तो वो एक्चुअली मेरे लिए भी हेल्पफुल थी कि लेवल अप करने के लिए ये करना चाहिए. या Okay, please explain the importance of design pattern and system designs. यस। सो लेट्स से अगर आप अभी फ्रेशर्स हो, और फ्रेशर्स के लिए मैं बताऊंगा कि डिजाइन पैटर्न एक्चुअली जिन भी कंपनीज के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो डिजाइन पैटर्न एक्चुअली हेल्पफुल फॉर मेकिंग द थिंग्स according to the solid principles. There are some principles that you will learn when you will be going through all of that. So let's say there are multiple sources you can learn from the YouTube, you can learn from the some other sources which are available at Google. So what you can do, you can start learning them, and the advantages of learning them is actually building the solution, building the software in a great fashion. You won't be just sticking to building a like software which looks good at the front side, but when you will just review the code, that review like coding part will not be good. So you must understand like how you have to design it low level wise. You will be able to understand how the concept of the oops programming that you have understood will be very helpful while building those systems. So some design patterns are helpful for some of the criteria. Let's say you are learning a factory design pattern, so what will be the use case of that? So child ke andar multiple times you are writing same code, so redundancy will be there. So redundancy को resolve करने के लिए हम पैटर्न्स का, इस डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। तो इस तरह से ही सबके अपने अपने यूज केसेस हैं, सब अपने अपने जो भी सिस्टम हम बिल्ड करना चाह रहे हैं उसके उसके यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डिजाइन पैटर्न लगेगा। तो वो हेल्पफुल होता है हमारे सिस्टम को स्केलेबल बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे मतलब सॉलिड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो वो पूरा पूरा उसको फिट करने के लिए डिजाइन पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंपनीज के अंदर भी जब हम अभी इस वक्त वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर भी डिजाइन पैटर्न का इंपॉर्टेंस है। जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो आपको आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो
कोडिंग के अलावा थर्ड ईयर के मतलब फोर्थ ईयर में जस्ट जंप कर रहे हो, जा रहे हो, तो कोडिंग के अलावा थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न की नॉलेज जस्ट आपने ऊप सीख लिया है, दैट्स गुड। सो अब आप क्या करो कि उस ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा एडवांस वे में सोचने की कोशिश करो कि किस तरह से आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, लेट्स से किसी ने आपको एटीएम डिजाइन करने के लिए कहा इंटरव्यू के अंदर, एंड आई हैव सीन like in DTU also, when the companies came, Hyperverge and companies like Policy Bazaar and some other companies, they asked little bit about the low level design. ओह! सो लो लेवल डिजाइन के लिए थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न की नॉलेज होनी जरूरी है। वो जस्ट देखना चाहते थे कि किस तरह से आप अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को कन्वर्ट कर रहे हो इस डिजाइन पैटर्न को, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए। तो वो डिजाइन पैटर्न्स की नॉलेज के थ्रू हो जाएगा। और डिजाइन पैटर्न्स की इंपॉर्टेंस तो है ही कि अब जैसे मैंने बताया स्केलेबिलिटी के लिए हेल्पफुल होता है, मैनेज मतलब कोड को मैनेज करना है अच्छे तरीके से, उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो वो आप सीख सकते हो। आजकल मैंने देखा है कि देयर इज वन यूट्यूब चैनल, लेट्स से इफ यू राइट द लो लेवल डिजाइन देन फर्स्ट इट विल कम। So there are 32 videos in that. I don't know the name of that person. He is but I saw the videos. He is doing the great job. He's like not only just showing the solid principle and design patterns, but he's also showing how he is applying these design patterns to those applications to build them. सो उससे भी मैंने सीखा था। और बहुत सारे मतलब जैसे गीक फॉर गीक्स पे मैं गया था, स्टार्टिंग में मैंने सॉलिड प्रिंसिपल जस्ट लर्न करे थे, और कुछ डिजाइन पैटर्न की हेल्प मैंने ली थी स्टार्टिंग में जब मैंने कुछ कंपनीज के इंटरव्यूज में गया था, लेकिन इतना मेरे को नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से डिजाइन पैटर्न थर्ड ईयर तक पढ़ने चाहिए। बट अभी मैं बता रहा हूँ कि डिजाइन पैटर्न अगर आप सीखते हो तो that will be not only helpful in the coding interviews, let's say if they ask about LLD, but also it will be helpful when you will go to the company. ओके, तो आपने ऊप्स और डीबीएमएस ये कहाँ से सीखा था? Oops और DBMS यार मैंने सीखा हुँ, था from YouTube. So you can teach what I did because oops और DBMS रिलेटेड हमारी क्लासेस भी होती थी कॉलेज के अंदर। तो वो सब्जेक्ट था हमारा। तो oops और DBMS की हमारी जो मैम थी वो बहुत मतलब अच्छी मैम थी, उन्होंने सिखा दिया था बहुत ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए ड्यूरिंग द प्लेसमेंट टाइम और इंटर्न टाइम, तो मैंने क्या करा कि एक यूट्यूब पे स्टार्टिंग में गेट स्मैशर्स करके हैं चैनल, तो उनसे मैंने सीखा। और भी बहुत सारे हैं सोर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही से सीखो, बहुत सारे सोर्सेज हैं, किसी से भी सीख सकते हो। मैंने वहाँ से सीखा, वहाँ से देखा, और फिर अपने एक नोट्स बना लिए थे कुछ, क्योंकि वो हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कब कौन से डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, तुम्हें हुँ, वो हुँ। पढ़ के जाना है मेनली, अगर इफ यू डोंट हैव टाइम मच टाइम। सो आप तुम रिवाइज करोगे पूरा पूरा एवरी वीडियो सर्च करोगे, सच है कि नोट्स बना के रख लो। तो वो मैंने मतलब बना के रखा था और उससे मेरे को हेल्प बहुत मिली। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग लव एंड कुछ एडवाइस आपको अगर देनी हो? Thanks Raj, or that's a great initiative that you took, and you are forwarding this, and you also you can share your interview experience. You also got an internship at talent system, so that's a good, and congratulations to you too. थैंक्स। So the advice will be जैसा तुमने कहा रेटिंग वगैरह के बारे में, या फिर ऐसे कि अगर तुम्हें कभी भी लगे कि यार तुम कोडिंग में पीछे हो रहे हो, या फिर सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप स्किल नहीं कर पा रहे अपने आप को, और आप सॉल्विंग नहीं कर पा रहे, तो क्या करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, और दोबारा से स्टार्ट करो। अभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि पीछे हटने का मतलब यही है कि आपको मतलब आप ये सोच के बैठ गए कि हार्ट प्रॉब्लम्स विल नॉट बी बाय यू। पहले मैं ये सोचा था, लेकिन ये होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको लगता है ये स्टार्टिंग में हर चीज डिफिकल्ट लगती है, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे आप टाइम दोगे, प्रॉब्लम्स को टाइम दोगे, नहीं होगी सोल्व, मीडियम भी नहीं होगी, इजी भी नहीं होगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप लगे रहोगे, तो लीड कोड हो चेन टू बिट हो, तो सारी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सोल्व होने लग जाएंगी। और हार्ड प्रॉब्लम नहीं होगी, दे आर हार्ड, दे एक्चुअली नॉट इजी। और इट विल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप फुल्ली फ्लैश कोड लिख के उसे दे दो, और हार्ड प्रॉब्लम के लिए अगर वो हो तो ऐसा कुछ नहीं है। और बस आपको थोड़ा सा अप स्किल करने के लिए हार्ड प्रॉब्लम्स करनी जरूर चाहिए, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल मतलब that will be helpful for you to understand the logic behind that problem. So an intuition will be created so that अगर नेक्स्ट टाइम कोई मीडियम लेवल की प्रॉब्लम भी आई तो आप कर दोगे, क्योंकि आपने उस टाइप की हार्ड प्रॉब्लम करी हुई है। ठीक, तो जस्ट मैं एक एडवाइस यही दूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत मतलब मेरे को लगा कि मैंने भी बहुत ऐसा टाइम फेस किया जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ अपने आप को ही। तो डिमोटिवेट कभी भी मत हो ना, स्टार्ट करते रहो,
और हमेशा लगे रहो, मतलब लगे रहोगे ना तो सफलता मिल ही जाएगी, यही वाली बात। हाँ, मतलब वैसे हुआ कि अगर ज़्यादा अहंकार आ जाए तो अपने से ऊपर वाले को देखो, अगर डिमोटिवेशन हो रहा है तो जिसकी रेटिंग अभी थोड़ी कम है उसकी तरफ भी देखना चाहिए। हाँ। उसे हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही बिल्कुल। यही कहना चाह रहा था कि कभी भी आपको रुकना नहीं है, मेनली आपको लगे रहना है। आज नहीं होगी कल होगी। मैंने देखा खुद कि कुछ प्रॉब्लम जो मेरे पे आज नहीं हुई थी, मतलब इस किसी पर्टिकुलर डे पर नहीं हुई थी, मैं अगले दिन उठा रिलैक्स होकर और सुबह के टाइम मैंने सॉल्व करने देख बैठा तो मेरे को आइडिया आ गया और मैंने सॉल्व कर दी। सेम सारे ग्रेट। टेस्ट केस पास कर दिए थे, तो यही होता है। तो आपको कभी भी मतलब छोड़ना नहीं है, ऐसे कि नहीं आज यार कोडिंग में प्रॉब्लम हो नहीं पा रही है, आज कॉन्टेस्ट देकर मतलब कॉन्टेस्ट ब्रेक बहुत ले लो। बेकार गया, मेरी रेटिंग तो ब्रेक ले लो हम्म। थोड़ा-सा, कुछ दिनों का, फिर उसके बाद स्टार्ट करो। लेकिन करो, करो ज़रूर। ग्रेट। सो मज़ा आया बात करके आपके साथ। ओके, सो लो, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। Yeah, thanks, Raj, and thanks for this great initiative that you took.